about this profession. What these people do? Berufsbilder, Reiser Verkehrs Kaufmann, ये टूल्स बेचते हैं, लोगों को प्लान बना के देते हैं, कहाँ घुमा के लाना है, क्या है उनके काम, क्या है उसके बारे में ये टेक्स्ट है. Lesen Sie den Text und sammeln Sie Informationen in Wörternetz. Jenny Manteuffel, Reiseverkehrskauffrau. Jenny Manteuffel arbeitet im Reisebüro Icarus in Kassel. कोई reisebüro है, ट्रेवल एजेंसी है, कोई ट्रेवल ऑफिस है उनका कासल में. कासल जर्मनी में एक सिटी है. जी ist Reiseverkehrskauffrau und organisiert Urlaubs- und Geschäftsreisen. Organisiert, sie organizes holiday tours und business tours, trips. Reiseverkehrskaufleute reservieren Zimmer in Hotels, they book rooms in hotels, informieren Kunden, they inform customers über Reiseziele. मीन्स कहाँ पे वो जा सकते हैं, क्या ठीक रहेगा, ऐसे इन्फॉर्म करते हैं लोगों को अबाउट जर्नी डेस्टिनेशंस, कि गोवा क्यों जाना चाहिए, इन कन्विंस करते हैं, बहुत बढ़िया है. और Frau Manteuffel muss viele Länder sehr gut kennen because this is her profession, so she should know very well many countries and these such interesting destinations. लोग पूछेंगे तो जवाब होना चाहिए आपके पास. जी Spezialistin für Reisen nach Kanada, बहुत बड़ी कंपनी है भाई ये तो, मतलब कंट्री वाइज उन्होंने अपने एक्सपर्ट्स बैठा रखे हैं. एंड शी इज एक्सपर्ट फॉर ट्रिप टू कनाडा, खास तौर पे कनाडा जाना हो किसी को तो उससे बात करो ऐसे. Mit dem Computer recherchiert sie Reiseziele, Preise und Fahrpläne. With computer उसका काम यही है, रिसर्च करती रहती है, न्यू जर्नी डेस्टिनेशंस, कॉस्ट कहाँ की कितनी पड़ेगी, कम से कम कॉस्ट कैसे पड़ सकती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे इंप्रेस कर सकते हैं, उन Fahrpläne and Plans. Sie muss viel organisieren, sie has to organize many things. Zum Beispiel Exkursionen, किस तरह से ट्रिप्स बनाते हैं, planen und dann die Hotels buchen, booking of the hotels. Manchmal macht sie auch eine Qualitätskontrolle in Hotels. कभी-कभी क्वालिटी कंट्रोल भी चेक करती है. फोटो में तो किसी ने क्या लिखा है बट खुद जाके या कैसे पता करवाती है. In Hotels und sie informiert sich über neue Reisetrends auf einer Messe. इस तरह की जो भी मेसे का मतलब होता है फेयर वगैरह लगते हैं, मेसे फेयर. जैसे बुक फेयर है उसको बोलेंगे बुक मेसे, टेक्नोलॉजी फेयर टेक मेसे, इस तरह से. सो मेसन letzte Woche war sie in Friedrichshafen zur internationalen Touristenmesse. Touristikmesse था पिछले वीक ही, she was there, और मेसे का नाम था Reisen und Freizeit. Reisen und Freizeit नाम रखा था उसका, कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके कि फ्री टाइम में कहाँ जर्नी करनी चाहिए, कहाँ घूम के आना चाहिए. तो ऐसा कोई फेयर ऑर्गेनाइज किया गया था. She was also there. Im Trend sind trekking tours und städte trips. ट्रेंड में है अभी ट्रेकिंग टूर्स एंड सिटी ट्रिप्स. तो लोगों को इन्फॉर्म करते हैं, ये काम है इनके. So was machen diese Reiseverkaufsleute? क्या क्या काम है उसके इसमें देख के बताओ. What made them computer research? The price order, foreign planning, misorganization, Reise order, planning. excursion. Sie muss viele organisieren. Sie muss viel organisieren. She has to organize lot of things. Zum Beispiel, for example, Exkursionen, planen und dann die Hotel buchen. Manchmal macht sie auch ein Qualitätskontrolle im Hotel oder sie informiert sie über nach Reisetour.
und Reise und Freizeit in der Tent in der Trekking Tourist und Staffing. Right. So planen, Hotel buchen, manchmal Quality controlen, ja, kontrollieren, Tourist das sind, Center. ja, richtig. Manchmal muss sie auch solche Messen besuchen, damit sie sich informieren können, क्योंकि उसको खुद को भी inform करना पड़ता है about these trends, and right now these are the trends. So, Leute reservieren, buchen Hotels, organisieren viel, Reiseziel Trends, recherchieren, Informationen sammeln, suchen, das sind dann ein Thema. Ja, das war es über sie. Menschen stellen immer wieder Fragen und dann gibt es noch eine Person. Okay? Anuja, kannst du bitte das lesen? Beruf Fachangestellte für Bäderbetriebe. So, some people are also working at such places. Sie arbeitet wo andere ihre Freizeit verbringen bei Gäste nennen sie Fachangestellte Fachgestellten für Badebetriebe, Meister, Schwimmer, Meister oder Bademeister innen steht nicht nur Pool am Beckenrand. Sie haben auch viele Aufgaben. Sie kontrollieren die Wasserqualität, Bacterium, die Badegäste geben Schwimmunterricht und überwachen die Technik und die Übergabe in Schwimmbadern. Sie haben eine Ausbildung in Erste Hilfe und als Rettungsschwimmer, Bademeister innen arbeiten oft in Frei- und Hallenbadern an See und am Strand in Fitness-Centern oder in Wellness-Hotels. Right. So, Sie arbeiten wo andere ihre Freizeit verbringen. ये लोग जो हैं, ये ऐसी जगह काम करते हैं जहां दूसरे लोग अपना फ्री टाइम एंजॉय करते हैं. Badegäste nennen die Fachangestellte. They are considered as experts. Fach is subject, Angestellte मतलब सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं. फिर Bäderbetrieb है, खास तौर पे बाढ़ का मतलब होता है वैसे नहाने से, है ना. जैसे Bäderbetrieb का मतलब है नहाने से रिलेटेड ये एंटरप्राइज बिजनेस है ना, ये भी अपने आप में. स्विमिंग पूल और ऐसी जगह पे जी जिन स्विमर माइस्टर, इनको कुछ लोग स्विम माइस्टर भी बोलते हैं, स्विमिंग एक्सपर्ट्स. स्विमर ये ट्रेनर हैं, ये लोग कोई डूब नहीं जाए तो तैर के बचाना है इनका काम. सो इनको स्विम माइस्टर बोलते हैं कुछ लोग, कुछ उसको बाडे माइस्टर बोल देते हैं. बाडे माइस्टर कुछ लोग बोल देते हैं इनको Fachangestellte एक्सपर्ट्स की श्रेणी में, कि सब अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं. ये अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं. Bademeister stehen nicht nur cool am Beckenrand. ये केवल कूल ऐसे ही खड़े रहते ऐसा नहीं है. जी haben auch viele Aufgaben. They also have many Aufgaben, tasks. इनके भी काम होते हैं. जी kontrollieren die Wasserqualität. अब लोग नहाते ही रहेंगे तो गंदा भी हो जाएगा पानी. सो उसकी क्वालिटी भी मेंटेन रखनी है. सो जी kontrollieren, they check and manage that quality, maintain that quality. Betreuen die Badegäste. Betreuen का मतलब है support. They support these bathing guests. नहाने के लिए जो भी आ रहे हैं गेस्ट है इनके तो ना. सो Badegäste geben Schwimmunterricht. They give them classes, swimming classes, und überwachen die Technik und die Sauberkeit in Schwimmbädern, the technology and
Sauberkeit साफ सफाई, cleanliness they have to control in Schwimmbäden, मतलब स्विम बाथ्स, ये पूल, स्विमिंग पूल्स वगैरह में. जी haben eine Ausbildung in Erste Hilfe, इनकी बाकायदा एक ट्रेनिंग होती है फर्स्ट एड की. Erste Hilfe इज फर्स्ट एड. ये कैसे दी जाए, कोई डूब गया, कुछ लग गई तो हैंडल तो करना ही पड़ेगा, एक्सीडेंट तो होंगे ही हर जगह. Und als Rettungsschwimmer, उनकी ट्रेनिंग रेटुंग रेस्क्यू स्विमर की भी होती है, डूबे हुए को निकाल के कैसे लाना है. So they are trained for that also, because डूबेंगे लोग तो बार बार, उनका काम ही है निकालना उनको. Bademeisterinnen arbeiten oft in Frei- und Hallenbädern, इस तरह के पूल्स में काम करना है उनका. Ansehen का मतलब है जो लेक्स हैं, जो सी किनारे हैं, am Strand, बीचेस पे ये काम करते हैं. इन फिटनेस सेंटर, फिटनेस स्टूडियो और वेलनेस होटल्स, यहाँ पे ये लोग काम करते हैं. ये ट्रेनर है, स्विमिंग सिखाते हैं साथ में. सो ये अलग अलग, ये एक प्रोफेशन था, ये अलग टाइप के प्रोफेशन है, अलग हटके जो प्रोफेशन है उनको, उनके बारे में बता रहे हैं. जो वारिस, इस बहाने से क्या कुछ कुछ वोकैब आपको मिलती है. या jetzt sollten Sie auch dann Wortschatz, ये और करेंगे हम लोग. आपको ये वोकैब निकालनी है. Verkehr, Büro, Urlaub. Verkehr मतलब Verkehr is transport. Transport. Bureau is office. Urlaub vacation. Urlaub is vacation, holiday. Yeah. Ferien is vacation, Urlaub holiday. Okay. So arbeiten. Bureau. Bureau. Bus. Bus. Verkehr. बोलना है, सबको बोलना है. Bus. Verkehr. Verkehr. बिना बोले चौंच खुले बिना प्रैक्टिस ही नहीं होगी. Bus Verkehr. Bus. Verkehr. Computer. Bureau. Berge. Urlaub. Urlaub. हॉलिडेज से एसोसिएट कर सकते हैं ना अपन. Yeah. माउंटेन्स को, बैरगेज माउंटेन्स. ड्रूकर इज प्रिंटर. Bureau. ब्यूरो. मॉनिटर. Monitor Bureau. जोने. Zone Urlaub. उर्लाउ. नोटियरन. Notice. ब्यूरो. कुछ नोट करना. Yeah, notice. नोटियरन. Foreign. फाराट. Verkehr. फरकेयर. फाराट इज Picnic. फरकेयर. पिकनिक. Urlaub. उर्लाउ. श्राइबन. Bureau. ब्यूरो. टैक्सी. Verkehr. फरकेयर. ओके. फरकेयर. इसको फर बोलो, फर. फरकेयर. Verkehr. बार्डन. Baden मतलब Urlaub. ओके. हॉलिडेज में नहाएंगे, नहीं नहाएंगे तो रोज मतलब, लेकिन वो बीच बीच पे. ब्रिज के पास समुद्र किनारे. यस. U-Bahn. U-Bahn. Verkehr. हाँ. Verkehr. फर. Verkehr. फरकेयर. एट साइलेंट. फरकेयर. Verkehr. टेलीफोनियरन. Bureau. Verkehr. Urlaub में भी टेलीफोन देता है. इंजल. Urlaub. इंजल इज उर्लाउ. इंजल इज आइलैंड, टापू. Tapu. ईमेल. Bureau. ब्यूरो. म्यूजियम. Museum. Urlaub. अम्पल. Verkehr. फरकेयर. अम्पल इज ट्रैफिक लाइट. Verkehr. फ्लीगन. Verkehr. फरकेयर. पाउच माखन. Verkehr में भी होता है. Bureau. ब्यूरो. होता है. काम के बीच में ब्रेक लेना है. Okay. स्टाउ. Stau means Bureau. Urlaub. स्टाउ इज फरकेयर. स्टाउ का मतलब है ट्रैफिक जाम. तो ट्रैफिक जाम, तो ट्रैफिक होगा तभी होगा. Verkehr मतलब Stau मतलब ट्रैफिक जाम.